Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to Century Press and Publishers. Dear students, are you ready? Okay students, tell me how we can use a and an with different words. Do you remember? Okay, let me tell you. Let's revise it. Okay, let's revise. हम लोग आ और एन का इस्तेमाल एक सिंगल चीज़ को मेंशन करने के लिए करते थे. ओके, व्हेन वी हैव टू मेंशन अ सिंगल थिंग वी विल यूज आ और एन विद द वर्ड. लेकिन आ और एन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये मैंने आपको बताया था. लाइक वी कैन यूज एन विद वर्ड्स दैट स्टार्ट विद वोवल साउंड्स. ओके, यानी कि जिनका बिगिनिंग साउंड वोवल होता है उनके साथ हम एन यूज़ करते हैं, और जो दूसरे वर्ड्स होते हैं विच आर नॉट वोवल्स उनके साथ हम आ यूज़ करते हैं. है ना, याद है ना आपको? ओके, सो लेट्स सी ऑन योर पेज हाउ वी आर यूजिंग आ और एन वंस अगेन. ओके, दिस इज अ बस. ओके, सो हियर it is a bus because B is not a vowel. Okay, it is an apple because A is a vowel. It is a pencil. P is not a vowel, so we are using a pencil. Okay, it is an eagle because E is a vowel. अच्छा, अब मुझे आप बताएं why we are using a with cup. It is a cup. Why we are using a here? हम यहाँ पे a इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जी? बिल्कुल, because C is not a vowel और हम vowel के अलावा बाकी तमाम वर्ड्स के साथ a यूज़ करते हैं. Next is it is an ink pot. An ink pot means I is a vowel. Next, it is a book. So book B is not a vowel. That is why we are using a here. Okay. Next is it is an umbrella. Okay, because U is a vowel, so we have to use an with it. Okay students, let's do an activity so that we can revise our concept properly. Here we have to fill in the blanks with a or an. यानी कि हमने इन ब्लैंक्स में आ और एन को लिखकर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सो इट इज डैश बॉय. सो टेल मी, बी इज अ वोवल और नॉट? यस, बी इज नॉट अ वोवल, एंड व्हेन द लेटर इज नॉट अ वोवल देन वी यूज अ. वेरी गुड. सो इट इज अ बॉय. ओके, नेक्स्ट इज इट इज डैश एलिफेंट. So what is the initial sound of elephant? Yes, it's E, and E is a vowel. So with vowels we use an. So it is an elephant. Very good. Next is it is dash mug. Okay, so what is the initial sound? Yes, it's M, and M is not a vowel. So we will use a here. It is a mug. Okay. Next is it is dash uniform. What is the initial sound of uniform? Yes, it's U, and U is a vowel. So we will use an here. It is an uniform. Okay. Next is it is dash onion. What is the initial sound? It's O, and it is also a vowel, so we can use an here. It is an onion. Okay, let's move. It is dash bus. So B is not a vowel. B is the initial sound of bus and it is not a vowel, so we will use a here. It is a bus. Okay students? जी तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने आ और एन का इस्तेमाल करना है. यू हैव टू रिकॉग्नाइज द वोवल साउंड्स एंड देन यू कैन टेल यू हैव टू यूज आ और एन टू कंप्लीट द सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, आपने अपने वोवल्स और कंसोनेंट्स को रिवाइज करना है और अच्छे तरीके से आ और एन का यूज़ करना है.
Take good care of yourself. Keep learning. We will come back with another video. Allah Hafiz.